Hello, my dear students. Welcome to the 6th standard CBSE science syllabus and Dr. Homi Baba Balvaidyanik competition exams coaching class. Today I'm going to start chapter number 7, things around us. Things around us. So 6th standard CBSE science chapter number 7, things around us. So dear students, in our surrounding there are so many things are present. Some things are living and some things are non-living. For example, human being, plants, animals which are present, different type of animals which are present in our surrounding. Those are the living thing. Then clouds है, rock है, soil है, chair है, table है. Like this, so many examples. They are the non-living thing. So things are classified into two main groups, that is living thing and non-living thing. So in this chapter we have to learn the characteristic of living thing and next one non-living thing. किसे हमें living बोलना है and किसे हमें non-living बोलना है. So हमें characteristic of living thing ये चैप्टर में लर्न करना है. ओके, क्या सीखना है ये पूरे चैप्टर में? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, इसे हमें लिविंग बोलना है. कौन से पॉइंट है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस दे आर द लिविंग एंड they are the non-living. So which are the characteristic of living thing? So first characteristic of living thing, that is structural organization. First characteristic, that is structural organization. So which one is the first characteristic of living thing? So in the living thing, first characteristic, that is structural organization. Structural organization, or it is also called cellular structure. Okay, it is also called cellular structure. इसके two name है, that is structural organization or it is also called cellular structure. So all living things have definite structural organization, and the body of living thing are made up of millions, billion, trillions of the cell. So the structural organization है, living thing का जो structural organization है, तो कैसे होता है लिविंग थिंग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज द सेल. Then next one is the tissue. No, I am doing the recording and I am uploading on the YouTube. Okay, so please keep quiet. I know तेरा चैप्टर हो गया है पहले. So cell, tissue, then next one that is organ, then next one organ system, and this organ system is present in the organism. So organ system is present in the organism. So this is called structural organization of the living thing. मैं रिपीट अगेन. ओके, लिविंग थिंग के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पहले क्या होता है? सेल, देन नेक्स्ट वन टिश्यू, देन नेक्स्ट वन दैट इज ऑर्गन, देन नेक्स्ट वन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन नेक्स्ट वन ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट in the organism. So this one is called structural organization of living thing. इसको बोलते हैं living thing का structural organization. Cell, tissue, organ system, and organ system is present in the organism.
organism. So all living thing, their body is made up of millions of cell. जो लिविंग थिंग है उनकी बॉडी कैसी बनी है, मिलियंस ऑफ द सेल. सो फर्स्ट वन वी हैव टू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल. सो दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग के बॉडी में सेल प्रेजेंट है. So cell is the basic structural, functional and fundamental unit of living thing. Cell is the smallest unit of living thing that are able to function independently. It's called cell. Cell is the smallest, okay, it is the smallest unit of living thing that able to function independently is called the cell. For example, red blood cell, then white blood cells, okay, are the examples of some cell. Okay, now next one, uh, group of cell that is called tissue. Okay, so say when many, this one is the cell, and when many cells are combined together, okay, many cells are combined together, that one is called tissue. This one is the cell, and this one is the tissue. So a group of similar cell that perform the same function is called tissue. Group of similar cell which perform the same function, that one is called tissue. For example, skin is the example of tissue, xylem is the example of tissue, phloem is the example of tissue, neurons, nerve cells is the example, nerve tissue is the example of tissue. So tissue कैसे फॉर्म होते हैं? Group of similar cell which perform the same function, that is called tissue. And simple definition सीखना होगा तो cell is the basic smallest unit. Okay, cell क्या है? Smallest unit है in the living thing that is able to function independently, that is called cell. When many cells are combined together, group of cell, that is called tissue. Group of tissue, when many tissue are combined together, that make the organ. Group of organ, that is called organ system, and organ system is present in the organism. For example, human being or animals are the organism. तो organism के बॉडी में ये सब प्रेजेंट होता है. सेल सबसे स्मॉलेस्ट, that one is called cell. Group of cell, that is called tissue. Group of tissue, that is called organ. Group of organ, that is called organ system. And organ system is present in the organism. Okay, organ system किसमें present है? Organism में present होती है. Now cell का again simple example बताती हूँ. Do you know about the alphabets? अब सबको अल्फाबेट्स पता है. ओके, सो ये अल्फाबेट्स को हम सेल बोल सकते हैं. एंड अल्फाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स. तो वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. ओके, अल्फाबेट्स को सेल बोला, एंड अल्फाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स. तो वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. ओके, सो अंडरस्टैंड द टू टर्म्स सेल एंड टिश्यू. Tissue, may I repeat again, a group of similar cell that perform the same function is called tissue. For example, skin is the tissue, xylem is the tissue, phloem is the tissue, muscular tissue, cardiac tissue. Now, group of tissue that perform a particular function. Group of tissue का जो group है, group of tissue that perform a particular function. Tissue का group है, group of tissue that perform a particular function, it's called organ. For example, stomach organ है, lungs organ है, kidney organ है, heart organ है, like this.
ओके ऑर्गन भी टू टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन. तो अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गन. नाउ नेक्स्ट वन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन. Group of organ that work together to perform a particular life process, that is called organ system. Okay, so next one, group of organ. Okay, group of organ that work together to perform a particular life process is called organ system. For example, digestive system, respiratory system, circulatory system. Group of organ, organ का जो group है उसको हम क्या बोलते हैं? Group of organ that work together to perform a particular function, particular life process is called organ system. For example, digestive system, respiratory system, circulatory system, like this. Okay, understand up to this. And these living things are made up of one or more organ system, and that living thing is called organism. For example, human being is the organism. Human being क्या है? Organism. So this different system, okay, in the body of living thing, two or more organ systems are present, and these organ systems are present in the organism. For example, animals, human being, plants are the organism. Is it okay up to this, dear students? Okay, so um, सपोज एक सिंगल ब्रिक है. ब्रिक पता है ना सबको? ब्रिक क्या है? सेल. व्हेन मेनी ब्रिक्स आर कंबाइंड टुगेदर, ओके, मेनी ब्रिक्स आर कंबाइंड टुगेदर, उससे क्या ये है? ब्रिक. सिंगल है उसको हम सेल बोलने वाले हैं. व्हेन मेनी ब्रिक्स आर कंबाइंड टुगेदर इट मेक द वॉल. वॉल को हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू. And when many walls are combined together, it make the room. Room इसको हम बोल सकते हैं organ. And when many rooms, okay, when many rooms make the big house, उसको हम बोलने वाले हैं many rooms combined together. जब many rooms से बिल्डिंग बनती है इसको हम बिल्डिंग बोल सकते हैं. मेनी रूम से बिल्डिंग बनने वाली है. सो दैट जो बिल्डिंग है उसको हम बोलेंगे सिस्टम. एंड ऐसे 4-5 बिल्डिंग्स एक इसमें कंबाइन है, एक कॉलोनी में कंबाइन है, मेनी बिल्डिंग्स कंबाइन है, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म. ओके, एक सिंगल ब्रिक है उसको हमने सेल कंसीडर किया. ग्रुप ऑफ ब्रिक, many bricks combined together wall हो गए, just like tissue. So 4 wall combine होके room बन गई, just like organ. ये room से many room से building बन गई, like system. And many building से एक complete Ma'am, colony बन सकती is organism. है हम organism. ओके, जैसे कि अल्फाबेट है, अल्फाबेट मीन्स सेल. अल्फाबेट से ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट इज कॉल्ड वर्ड्स. वर्ड से पैसेज, ओके, देन पैसेज से पेज, एंड पेज से बुक. अंडरस्टैंड? इज इट ओके? जस्ट show me your thumb. Is it okay? Understand? So this one is called structural organization. So इसको हम क्या बोलते हैं? Structural organization. So first characteristic of living thing, that is structural organization, or the body of living thing is made up of cellular structure. Living thing की body किससे बनी है? That is the cellular structure. So depending upon the number of cell, living organism is classified into two groups, that is unicellular and next one multicellular. Unicellular and next one is
multicellular. लिविंग थिंग की बॉडी है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. लिविंग थिंग में कितने सेल्स हैं? So on the basis of number of cells, the body of living thing is classified into two groups, that is unicellular and next one is multicellular. So those organisms who is made of only one cell और सिंगल सेल, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, ओनली वन टाइप के सेल से बनी है, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर. ओके, लिविंग थिंग दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल is called unicellular. Example: amoeba, paramecium, euglena, chlorella, bacteria, yeast. Those are the example, and so many, etc. etc. Are Excuse the me, ma'am. example. Yes, Ma'am, algae is multicellular, unicellular. algae मैक्सिमम मल्टीसेलुलर है, बट algae में एक algae ऐसी है कि जो यूनिसेलुलर है एंड बाकी के सभी algae मल्टीसेलुलर है. ओके, क्लैमेडोमोनस नाम की जो अलगी है ना, वो यूनिसेलुलर है एंड बाकी सब अलगी कौन सी है? मल्टीसेलुलर है. ओके, सभी बैक्टीरिया कैसे है? यूनिसे बैक्टीरिया डिसीज स्प्रेड करते हैं ना, सभी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स है, so depending upon the number of cell, organisms are classified into two main groups, that is unicellular and next one is multicellular. So living thing made up of single cell are called unicellular. Example is amoeba, paramecium, euglena, chlorella, bacteria, yeast. Those are the unicellular. Next one, that is multicellular. Ma'am, Yes, ma'am, paramecium is unicellular. yes. Amoeba, paramecium, euglena, chlorella, bacteria, yeast, chlamydomonas are the example of unicellular. ओके, ये सब क्या हो गए? यूनिसेलुलर. नाउ नेक्स्ट वन, मल्टीसेलुलर. लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, they are called multicellular. Living thing whose body is made up of many cells, million billion cells are present, that one is called multicellular. So multicellular means many cells. So living organism in their body, many cells are present. They are called multicellular. And example of multicellular is plants. Okay, example of multicellular, many cells. Example of multicellular, that is plants and animal. Plants and animal कैसे होते हैं? इसके example है multicellular and some fungi. Okay, plants, animals, fungi are the multicellular. Human being, dog, cat, housefly. Okay, all animals. एग्जाम ऐसे स्पेशल डॉग कैट बैट करने से अच्छा है all animals are multicellular, plants are multicellular, algae are the multicellular. So first characteristic of living thing, that is living thing having the structural organization. लिविंग थिंग के बॉडी में क्या होता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इसको ही बोलते हैं दैट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर. सो living thing in their body structural organization is present and non-living thing do not having the structural organization. So this is the first characteristic of living thing. Now second characteristic of living thing, that is living thing need the food. Okay, second characteristic living thing का कौन सा है? That is living thing need the food. लिविंग थिंग को किसकी जरूरत होती है? दैट इज द फूड. लिविंग थिंग नीड द फूड. नाउ आई हैव द डस्टर. दिस डस्टर नॉन लिविंग, इसको फूड लगने वाला है? नो. ओके, सो मेरे पास सीजर है, नॉन लिविंग है, इसको फूड लगने वाला है? नो. बट लिविंग थिंग
need the food. So living thing का second characteristic है living thing need the food. So all living thing need the food for the survival. Why we take the food? Because food gives us the energy. Food is important for the growth. Food is important for the different life process. Food provide us the energy. So we are taking the food. So living thing need the food. So living thing में plants भी आते हैं and living thing में animals भी आते हैं. So plants and animals both are living thing. Yes, now may I correct or wrong? Am I correct or wrong? Correct. Yes. So living thing में दोनों आते हैं. That is plants also comes and next one animal also comes. Living thing में plants भी है and living thing में animals भी है. So plants make their own food. Plants make their own food. Plants make their own food by the process of photosynthesis. Okay, plant make their own food by the Photosynthesis. process of photosynthesis by using carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Plants make their own food. That food is glucose, and in this process, plant giving oxygen to the atmosphere. So plants are called producers and plants are also called autotrophs. Plants make their own food by the process of photosynthesis. So plants को क्या बोलते हैं? Producers. Plants are called producers. Plants are also called autotrophs. प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं एंड प्लांट्स को ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप? मेक देयर ओन फूड. जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप. नाउ एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. Do not make their own food. Do not make their own food. They are depend on the other. Animals depend on the other. So animals are called heterotroph. Okay, Heterotroph. heterotroph. And why animals are called heterotrophs? Because do not make their own food. खुद का फूड खुद बनाते हैं? No, they are depend on the other. So animals are called heterotrophs और एक name है that is called consumers. Animals are called heterotrophs or animals are called consumers because they do not make their own food. They are depend on the other. They are depend on the plant or animal. या तो प्लांट पे डिपेंड होंगे नहीं तो एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे. सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग दैट इज लिविंग थिंग नीड द फूड. व्हाट अबाउट द नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग को फूड लगता है? नो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट need the food. Living thing need the food. Non-living thing do not need the food. Now, third characteristic that is living thing grow. Living thing क्या करते हैं? Grow करते हैं. So living thing grow. Third characteristic that is living thing grows. Living thing grows. So growth is also characteristic of living thing. Okay, next characteristic that is the growth. Now again किसको हम living thing बोलते हैं? Plants and animals. So plants and animals. So growth is the characteristic of living thing. Growth क्या है? Living thing का एक characteristic का है. So all living thing shows the growth and life begin from the single cell. Okay, उनकी जो लाइफ होती है कैसे बिगेन होती है? फ्रॉम द सिंगल सेल. देन सेल ग्रो, सेल enlarge in size and it divide and it form the new cell. सबसे पहले एनिमल हो कि प्लांट हो,
सबसे पहले क्या होता है, दैट इज द सिंगल सेल. नाउ दिस सिंगल सेल इज ग्रो. ये सिंगल सेल क्या होती है, ग्रो होती है. अगेन दिस सिंगल सेल इज डिवाइड. ये सिंगल सेल बाद में क्या होती है, डिवाइड होती है. सो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल. दिस सिंगल सेल ग्रो, it divide and it form the new cell. डिवीजन होने के बाद उससे क्या फॉर्म होते हैं, दैट इज द न्यू सेल. इट फॉर्म द न्यू सेल. सो Ma'am, यस. ma'am, why it is divided, but यस, why it is means single cell? Why it is divided? ग्रोथ होना है ना, ग्रोथ होने के लिए, फॉर द ग्रोथ. So enlarge in the size and it divide to form the new cell, and the size of organism increases with increase in the number of cell. जैसे सेल के नंबर मोर हो जाएंगे वैसे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपकी हाइट बढ़ रही है, यस, बिकॉज इन योर बॉडी सेल्स क्या हो रहे, ग्रोथ हो रहे. Okay, so the size of organism increases with increase in the number of cells. Okay, सेल के नंबर इंक्रीज हो गए, ऑर्गेनिज्म की साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर इन द डिफरेंट स्टेज. सो ग्रोथ, ग्रोथ में 3 स्टेजेस होते हैं. सो फर्स्ट वन दैट इज रिप्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है, बाद में ग्रोथ होती है एंड बाद में नेक्स्ट वन स्टेबिलिटी आती है. तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, स्टेबल होता है. सो दैट वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. सो the growth of organism occur in the 3 stages. First one reproduction, then next one growth start, and then next one that is stability. So a seed grows, small seed है, seed grows into sapling, and sapling is again grows and it is converted into tree. सबसे पहले seed था, Ma'am, then sapling हो गया, and then वो grow होने के बाद big tree बन गया. वैसे ma'am, ह्यूमन बीइंग में भी है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है, देन ग्रोथ स्टार्ट होती है, देन नेक्स्ट वन एडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है. सो नाउ यू आर इन द ग्रोथ स्टेज. अभी आप कौन से स्टेज में हो, ग्रोथ स्टेज में हो. यस सचिन. ma'am, what meaning of sapling? यस, What meaning of सैपलिंग म्हणजे sapling? जस्ट सीड जर्मिनेट होने के बाद 2-3 लीफ आते हैं ना, उसको बोलते हैं सैपलिंग. Okay, ma'am. सीड है, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, जस्ट 2-3 लिव्स आने स्टार्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड सैपलिंग. बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ growth in the plant and animal is different. Okay, growth in the plant and animal is the different. In the plant growth occur throughout the life. प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ कैसी होती है, थ्रू आउट द लाइफ. इन द प्लांट ग्रोथ ऑकर थ्रू आउट द लाइफ, बट इन द एनिमल, okay, in the animal in a certain period, generally human being require 18 to 21 year for the growth. ह्यूमन बीइंग में 18 टू 21 ईयर में ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट ग्रोथ स्लो और स्टेबल, ग्रोथ स्लो हो जाती है और स्टेबल हो जाती है. 18 टू 21 में जनरली इन द ह्यूमन बीइंग 18 टू 21 ईयर टेक फॉर दिस ग्रोथ. ह्यूमन बीइंग देखो रिप्रोड्यूस होता है, देन ग्रोथ स्टार्ट होती है, 18 टू 21 तक ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है. आफ्टर दैट ग्रोथ, ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. नाउ देखो आपके मम्मी पापा है, दे आर इन द स्टेबल स्टेज, बट यू आर इन द ग्रोइंग स्टेज. एवरी ईयर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है. सो 18 टू 21 तक आप कंप्लीट एडल्ट बन जाओगे. ओके, आफ्टर दैट ग्रोथ बिकम स्टॉप और रिड्यूस, कम हो जाती है, स्टेबल हो जाता है. सो क्या डिफरेंस है इन द प्लांट.
प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है एंड एनिमल में आफ्टर सर्टन एज ग्रोथ बिकम स्टेबल। सर्टन एज के बाद ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है इन द एनिमल। बट प्लांट में जब तक प्लांट्स लाइव है थ्रू आउट द लाइफ इन द प्लांट ग्रोथ हैपन थ्रू आउट द लाइफ। ओके अंडरस्टैंड। एंड ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। मैंने आपको लास्ट संडे चेंजेस चैप्टर सिखाया था। ग्रोथ कौन से टाइप का चेंज है, इरिवर्सिबल मींस कैन नॉट बैक। अभी मुझे लगता है कि मैं आपके जैसे 6 में चली जाऊं, जा सकती हूँ मैं, बिकॉज अभी मैं फुल्ली ग्रो हो गई। ग्रोथ कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल। ओके ग्रोथ इज विच टाइप ऑफ चेंज, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कैन नॉट बैक, जिसमें हम बैक नहीं आ सकते हैं। ओके irreversible. yes, irreversible. So now next characteristic, that is living thing respire. Okay, next characteristic, living thing respire. Okay, living thing respire करता है, उसको हम respiration भी बोल सकते हैं। Okay, living thing respire or we call it as a respiration. So first of all, you should know the meaning of respiration. Okay, so सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, meaning of respiration. So what is the meaning of respiration? So आप बोलेंगे taking oxygen in and giving carbon dioxide out. That is called respiration. No. Okay, taking oxygen in, that is called inhalation. Giving carbon dioxide out, that is called exhalation. And this inhalation and exhalation is called breathing. उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इनहेलेशन एक्सेलेशन दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, दैट वन इज नॉट कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो व्हाट डू यू मीन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हम जो फूड खाते हैं उसका कन्वर्शन किसमें हो जाता है, ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन to obtain the energy, and in this process carbon dioxide is given out, that is called respiration. Okay, what is the meaning of respiration, breakdown of glucose। हम जो फूड खाते हैं उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है एंड ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज with the help of oxygen to obtain the energy, and in this process carbon dioxide is given out, and that is called respiration. So understand about the respiration. Respiration and breathing is different. Breathing means taking oxygen in, giving carbon dioxide out. That is called breathing. Breathing and respiration are the two different terms. ये two different term है. Okay, understand up to this? So respiration is Yes. one of the important life process in the living thing. Now different organism respire with the help of different organs. So those animal which live on the land, they respire with the help of lungs. जो एनिमल लैंड पे रहते हैं वो कौन से ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लंग्स। देन फिश रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। देन insects such as grasshopper breathe through the spiracle. Insect कैसे respiration करते हैं, with the help of spiracle, which is present at the side of the body. And next one, that is the plants. Plants कैसे respire करते हैं, with the help of stomata. So plant respire through the tiny holes, they are called stomata, and which are present on underside of leaves. So leaf है, leaf के underside पे small tiny holes are present, and these tiny holes or pores
They are called stomata. इसको क्या बोलते हैं? Stomata. Okay. And plants कैसे respiration करते हैं? With the help of stomata. And those animal which live on the land, for example human being है, cow है, buffalo है, dog है, जो भी many animals है कि जो land पे रहते हैं, वो किससे respiration करते हैं? With the help of lungs. फिश है, एक्वेटिक एनिमल से, फिश गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन। ओके, अर्थवर्म किससे रेस्पिरेशन करता है? मॉइस्ट स्किन। इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर breathe through the spiracles. Okay, they breathe through the spiracle. And plants respire through the stomata. Is it okay? So living thing do the breathing. Now I have this pain. ये पेन ब्रीदिंग करता है? नो. पेन क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ करते हैं? नो. आई हैव द डस्टर. ये डस्टर ब्रीदिंग करता है? नो. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, but living thing breathe. So those are the characteristic of living thing. That is living thing रेस्पायर. लिविंग थिंग क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रेस्पायर. जो नॉन लिविंग थिंग है वो रेस्पायर नहीं करते हैं. सो इज इट ओके अप टू दिस? Okay, now next characteristic of living thing, that is living thing move. Okay, next characteristic जो है living thing का वो कौन सा है? Living thing move. Fifth number characteristic, that is living things move. Living things क्या करते हैं? Move करते हैं. What about the non-living thing? Okay, non-living thing do not move. Yes, Swara. Yes, Swara. Jadhav. Okay, so living thing move. Except the plants, all living thing move. Animal move from one place to the another place in search of food, in search of shelter, to escape from the being hunted by the predator. So animals move, but plants remain fixed. Okay, now next one, that is living thing move. Again, living thing में plants and animals. So living thing, next one, plants and animals. So plants, animals move करते हैं. Yes, animals shows the movement. Animal move from one place to the another place in search of food, in search of shelter, to protect from the predator. Okay, so like this. Okay, yes, okay. So animal move from one place to the another place. What about the plants? Plants are remain fixed. Plants move होते हैं? No, plants are remain fixed to one place. But the part of the plants, shows the movements. प्लांट्स के जो पार्ट से वो मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द रूट्स. प्लांट्स के जो रूट्स है, रूट्स गोज टोवर्ड द ग्राउंड. ओके, टोवर्ड्स द अर्थ. ओके, प्लांट्स के जो रूट्स है, रूट्स ग्रोज टोवर्ड द ग्रेविटी. ओके, अर्थ में, सॉइल में रूट्स नीचे अंदर जाते हैं. ओके, so root goes toward the direction of gravity. Plants के roots inner side में जाते हैं. Towards the plants are okay. Plants के जो roots है, so roots grows toward the gravity, and that type of movement is called geotropism movement. And plant का जो stem होता है, so this stem goes toward the direction of sunlight. प्लांट का जो स्टेम होता है कौन से डायरेक्शन पे जाता है? टुवर्ड्स द सनलाइट. स्टेम ग्रोज टुवर्ड द लाइट, and that movement is called phototropism. Photo means light.
ओके, फोटो मीन्स लाइट। प्लांट का स्टेम कौन से डायरेक्शन में जाता है? ग्रो होता है सनलाइट की तरफ। ओके, स्टेम ग्रोज टुवर्ड द लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। रूट grows toward the gravity or towards the soil, so that movement is called geotropism. So plants may be root, stem. Okay, like this part shows the movement. Actually plant are fixed, but part of the plants shows the movements. प्लांट्स के ये जो पार्ट्स है जो मूवमेंट शो करते हैं, ग्रेविटी की तरफ हो गए, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। देन सनलाइट की तरफ हो गया, देन दैट वन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। So next characteristic, that is living thing show the movement. Then next characteristic, living thing responds to stimuli. Characteristic number 6, living things respond. Okay, living thing responds करता है to stimuli. Living thing responds to stimuli. Living thing responds करता है to stimuli. So here there is the two term, that is response. Okay, हमें two definition देखते हैं, that is response इसको बोलना है and which are the stimuli. Okay, response and next one stimuli. कौन सा इसको response बोलना है and क्या stimuli. So reacting to a change in the surrounding is called response. सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो गया तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्टिंग टू अ चेंज in the surrounding is called response, and changes around us makes us to respond. In our surrounding there are so many changes are present, so we respond. So all living things respond to stimuli. सभी लिविंग थिंग क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो प्लांट्स लिविंग थिंग, नेक्स्ट वन एनिमल्स लिविंग थिंग, बोथ आर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। रिस्पॉन्ड मीन्स रिएक्टिंग टू अ चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो गया तो हम रिएक्ट करते हैं, that is called response. And all living things respond to stimuli. One example, that is touch me not plant. When we touch the touch me not plant, it close its leaves. Okay, touch me not उसको mimosa बोलते हैं, मराठी में लाजाळू बोलते हैं। When we touch the touch me not plant, वो प्लांट क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है, close its leaves. Okay, बेटा इजी है। सन की तरफ जो स्टेम है, स्टेम सनलाइट की तरफ ग्रो हो गया, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। रूट्स ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। ओके, ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, उसको आपने टच किया तो उसके लीव्स क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। नाउ when immediately close its leaves, animal 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 also respond to stimuli. When your mother told me that keep that hot milk pot aside, and you directly touch that hot milk pot, then you enjoy? No, you release. Okay, when you touch that hot milk pot, you release that pot, means आपने क्या किया? स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो ऑब्जेक्ट हॉट था, उसको आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अपने उसको रिलीज कर दिया। सो विच आर द स्टिमुलाई? लाइक हीट, cold, touch, smell, sound, those are the different stimuli. Okay, you are walking, Ma'am, 1 minute, you are walking at night and there is a completely darkness, and if anyone flash the light to your eyes, you close your eyes. So क्या हो गया? Respond to stimuli. क्या हो गया? Respond to stimuli. You are stitching something and that needle prick to your finger. You enjoy that process? No, you are giving the response. Oh my God, I, papa, mummy, baba.
ओके, आप क्या करने वाले हो? रिस्पॉन्स करने वाले हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। व्हेन यू सडनली लिसन हार्श साउंड, जोर जोर से साउंड सुना लिया, आप क्या करते हो? आपके हैंड आपके ईयर पे रखते हो। सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, व्हेन यू एंटर द एनिमल शेप, that animal also go here and there, they also respond to stimuli. Have you seen the street light? नाइट के टाइम उसके तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। स्ट्रीट लाइट देखा है? नाइट के टाइम उसके तरफ इंसेक्ट, तो लाइट क्या हो गया? स्टिमुलाई। एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे, ये क्या हो गया? रिस्पॉन्ड। ओके, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यस स्वराजा। Ma'am, Miss, I'm Namrata. यस, Uh, Ma'am, you're telling that where sunlight is there, their plant stems are growing. But if the sunlight is in east, then plant stem will grow to east only, or they will spread everywhere. okay, so at that time normal growth, not necessary to phototropism। सनलाइट की तरफ ग्रो हो गया तो फोटोट्रोपिज्म, नहीं हुआ तो नॉर्मल ग्रोथ। Okay, thank you. Okay, so is it okay about the response to stimuli? Yes. Okay, so next characteristic of living thing, that is respond to stimuli. Okay, now next characteristic, that is living thing reproduce. Okay, next characteristic, that is living thing reproduce. Okay, next characteristic, that is living thing reproduce. Living thing reproduce another living thing like themselves. That one is called reproduction. The process by which living thing reproduce young one of their own kind, that is called reproduction. And reproduction is happen in the plants also. Plants are living. Next one, animals are also living. So living thing happens in the plants also. Living thing reproduction. Okay, reproduction happen in the plants also, and reproduction happen in the animals also. So in the animals, there are two type of reproduction, that is oviporous, and next one is viviporous। two type में reproduction के, first one is oviporous and next one is viviporous। So animals that lay the egg, animal that lay the egg, that animal are called viviporous, and animal that gives birth to young one, animal which gives birth to young one, that one is called viviporous animal। So the process by which living thing reproduce young one of their own kind is called reproduction। Plants also reproduce, animal also reproduce। So animal reproduce by the two way, lay the eggs and gives birth to young one। Okay, that one gives birth to young one, that is called oviporous, viviporous। So there are the two type of reproduction। reproduction के ये two type हो गए, oviporous and viviporous। Now next characteristic of living thing, that is living thing have definite a lifespan। next characteristic, living thing have definite lifespan। living thing की lifespan कैसी होती है? That is the definite। living thing having a definite lifespan, और living thing have a lifespan, और उसको death भी बोलते हैं। ओके, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को डेथ भी बोलते हैं। living thing have a death, non-living thing do not have either death। So all living thing, they grows, they adult and become old and finally die। So the time of organism from its birth to death, that time is called lifespan। Okay, from birth to death, the time period is called lifespan। Next one, next characteristic of living thing, that is living thing excrete। next characteristic, that is living thing
excrete the waste material thrown out of the body. That one is called excretion. Okay, living thing excrete. Again, living thing में plants होते हैं and living thing में animals होते हैं. So living thing shows the excretion, the waste material which are thrown out of the body. That one is called excretion. The process of getting rid of waste material by living thing is called excretion, and this waste material are thrown out of the body time to time. If we not throw this waste material from the body, then it collect in our body and it will be dangerous for us. So animal also do the excretion. Animal excrete the waste product. For example, undigested food हम हमारे बॉडी से थ्रो करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, it is also waste product. Urine, it is also waste product. Sweat, it is also waste product. So lungs, skin, kidney are the organ which excrete the waste product. Okay, kidney यूरिन एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है. स्किन स्वेट एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है. लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है. सो प्लांट also excrete gum, then rubber, latex, resin. Those are the plants waste product. ये प्लांट्स के क्या हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग शोज द सेलुलर स्ट्रक्चर, need the food, living thing grow, living thing respire, living thing move, living thing respond to stimuli, living thing reproduce, living thing having definite lifespan or death, and living thing excrete, and non living thing do not. ये सभी नॉन लिविंग थिंग नहीं करता है. So how we can learn this characteristic? There is a one shortcut trick. ये जो characteristic है हमें कैसे learn करना है? There is a one shortcut trick, and that trick is Mrs. Grain CD. कौन सी शॉर्टकट ट्रिक है? मिसेस ग्रेन सीडी. यहाँ पे M means movement, R means respiration, S means stimuli, G means growth, R means reproduction, E excretion, N means nutrition, and nutrition means food. Okay, N means nutrition, nutrition means food, C means cellular structure, and D means death. उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. सो ये शॉर्टकट ट्रिक आपने याद कर ली तो आपका पूरा लर्न हो जाता है. मिसेस ग्रेन सीडी. नोट डाउन दिस शॉर्टकट ट्रिक. It will be helpful. Mrs. Grain CD. It will be helpful to you to understand the characteristic of living thing or to learn the characteristic of living thing. ये आपको living thing के characteristic learn करने में help कर सकते हैं. Now next part of this chapter, that is habitat, the particular place where organism live and reproduce is called habitat. There are two main type of habitat: terrestrial habitat, aquatic habitat. Those plant and animal which live on the land, that habitat is called terrestrial. terrestrial में desert है, forest है, grassland है, mountain है. Then those plant and animal which live in water, that is called aquatic habitat. Now component of habitat, next one, that is components of habitat. कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. फर्स्ट वन, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट वन इज अबायोटिक कंपोनेंट. सो बायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है? दैट इज द प्लांट्स एंड एनिमल. So which are the two main components of habitat? Habitat के two main components कौन से हैं? First one is biotic and second one is abiotic. So biotic component में first one plants comes in biotic component, and next one
that is the animals, plants animal दोनों बायोटिक में आते हैं. Now next one, abiotic component. Abiotic component means soil comes in the abiotic component. Then next one, sunlight. Sunlight कौन सा है? Abiotic component है. Then next one, air. Air is abiotic component. Next one, that is water. Water is abiotic component. Next one is temperature. Temperature is a biotic component. Okay, so is it okay up to this? Habitat के definition सबको पता है. The particular place where organism lives and reproduce, that one is called habitat. Habitat के two place होते हैं. Habitat gives the food, air, water, shelter to the organism, and different plant and animal are lives in the same habitat. Two main type है, terrestrial habitat, aquatic habitat. जो प्लांट्स एनिमल लैंड पे रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. जो प्लांट्स एनिमल वाटर में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं. नाउ हैबिटेट कैसे बनता है? कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, abiotic component. Biotic में plants comes and animal comes. Now abiotic components. Abiotic components में first one soil है. So soil, the topmost layer of the earth crust, which is formed by weathering of rock, it is called soil, and soil give water, mineral to the growing plants. So soil is very important. If there is no soil, there is a no food. Second one, sunlight. Sunlight is very important because plant make their own food with the help of sunlight, and sunlight help to maintain the temperature. Next one, air. Air is also very important because air में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि सभी एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए लगता है. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो प्लांट्स को लगता है. सो एयर, एयर हमें टू इंपॉर्टेंट गैसेस देता है, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए लगता है, प्लांट को भी लगता है, एंड प्लांट्स को अलोंग विथ दिस कार्बन डाइऑक्साइड लगता है. So air is also very important. Now next one, water. Water is very important to all living things. Plant need the water to make the food. Human being, animal, they also need the water to carry out their function. Aquatic animal, they also need the water to survive. And next, a biotic component, that is the temperature. So temperature is how much any object is hot or cold. Any object, कोई object है कितना hot है कितना cold है, that is called temperature. And earth is the only planet in the solar system having the suitable temperature for the life to exist. Okay, so polar region having very cold temperature, equator having very hot temperature. So this temperature affect the plants and animal life. Now, based on the temperature, टेम्परेचर के बेस पे एनिमल के टू टाइप होते हैं, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल and next one, cold blooded animal. So those animal whose body temperature remain constant if outside temperature is changed, they are called warm blooded. बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, they are called warm blooded animal. So mammals and birds, mammals and birds किसमें आते हैं? warm blooded animal. Now cold blooded animal, so those animal whose body temperature is changes with the surrounding, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है सराउंडिंग के साथ में, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल फिश, amphibian, reptiles, they are called cold blooded animals. So biotic Ma'am, component, a biotic component have the close relation. Yes. ma'am, why on the earth
is said only living thing we survive, while on other planet can't. Temperature is suitable, water is present, temperature is maintained, not so cold, not so hot. Okay, water is present. Okay, that's why आपने देखा है क्या अदर प्लैनेट पे कोई लोग रहते हैं? नो बेटा, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैविंग द सुटेबल टेम्परेचर टू लाइव फॉर ऑर्गेनिज्म. Okay, understand? So this biotic, okay, and abiotic component having the close relation and they are depend on each other. ये जो biotic abiotic components है, so they have the close interrelation and they are depend on each other. In between them, there is the interaction is present. So here your chapter number 7, characteristic of living thing, I have completed and you have to complete practice zone. जो practice zone है, exercise है, आपको solve करना है in your notebook. First read the chapter 2-3 times. Chapter 2-3 times read करना है, then solve the practice zone in your notebook. Is it okay? Today I have completed chapter number 7 and which is matched with chapter number 2 in your state board book. Okay, आप जब state board का chapter number 2 देखोगे, living the living world, so same point है उसमें मैम, और इसमें. So chapter number 2, the living world, growth, एक्सक्यूज then मी मैम. food is necessary, respiration, excretion, respond to stimuli, reproduction, lifespan, cellular structure. पूरा chapter same ही. So is it okay, dear students? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, मैम, Yes. मैम, वन डाउट था. Yes. मैम, वो जो प्रैक्टिस जोन 7th लेसन का है और 2nd लेसन का है, वो दोनों करना है क्या? 7 का करो ना पहले. ओके मैम. Okay, chalo, is it okay, Ma'am. dear students? Read this chapter carefully. Okay, chapter 2-3 time read करना है. Okay, bye. बाय बाय. Ma'am. Yes. मॅम तुम्ही जी कालची टेस्ट होती त्याच्यात हो 49 करते बेटा करेक्शन. ठीक आहे ना, इट्स ओके. करते करेक्शन. मला परत व्हॉट्सअप वर मेसेज करून दे. चलो, ओके, बाय. मैम, यस. इस लेसन की पीडीएफ शेयर कर देना. किए बेटा, ग्रुप चेक किया करो ना प्लीज. मुझे पूछने से पहले ग्रुप देखा करो ना. ओके, बाय.